Here we examine only the first three characters of the key such that hash values can remain in reasonable range. The value 27 represents the number of letters in English alphabet plus the blank space, and that's your base. A code snippet taken from your textbook function hash2 takes two arguments. One is type pointer to a constant character and the variable name is key, and the other is type integer with variable name table size. Again, your C-string variable key declared as pointer to array of character. Key index 0 is your first character ASCII value times base to power 0, which is 1. Key index 1 is your second character ASCII value times base to power 1, which is 27. Key index 2 is your third character ASCII value times base to power 2, which is 729. Once the summation is done, we take modulo with table size m and the result is returned. This function, though easily computable, is also not appropriate if the hash table is reasonably large. ये जो फंक्शन है hash2 ये आपकी बुक से लिया गया है. इनफैक्ट ये आपकी लैब का भी हिस्सा है, hash1 and hash2. So hash2 जो है वो basically two arguments input लेता है and returns type index. Index जो है वो unsigned integer है. So इसका जो पहला argument है वो डेटा टाइप है कांस्टेंट करैक्टर और वेरिएबल है की, और ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है सी स्ट्रिंग अरे को जिसके पहले तीन करैक्टर आप यूज़ करेंगे. दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल साइज़, और टेबल साइज़ हम इसलिए चाहिए ताकि हम मॉड ऑपरेटर अप्लाई कर सकें. हमने जो एग्जांपल ली थी ABC की 0 में एस की वैल्यू ए की वैल्यू पॉइंटेड है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेस टू पावर 0 जो बेसिकली 1 है. हमारी बेस इस केस में 27 है. सो 27 टू बेस टू पावर 0 इज़ 1. उसके अंदर ऐड करेंगे हम 27 टू पावर 1, बेसिकली ये हमारी बेस टू पावर 1 है, टाइम्स एस की वैल्यू ऑफ बी प्लस 729 जो कि बेस टू पावर 2 है, 27 टू पावर 2 टाइम्स एस की वैल्यू ऑफ सी, और जो रिज़ल्ट होगा वो हम मॉड्यूलो विद रिस्पेक्ट टू टेबल साइज लेके रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को. The rule of thumb for hash function are: the hash function should be able to achieve uniform full coverage of the hash table while minimizing collisions. It needs to calculate hash value quickly. Hash table size is mainly a prime number. Uniform full coverage of the hash table is usually impossible, and collisions will almost always occur. An important design consideration is how you deal with the collision resolutions. No matter what the hash function you have chosen or written, there is the possibility that two keys could resolve to the same hash value. In the real world, we have infinite supply of keys. Avoiding collision is impossible. Now let's look at one of the methods for resolving collision, which is called separate chaining. Now how to deal with two keys which hash to the same spot in the array. We can use chaining all data items that hash to the same hash key or number
are kept in a linked list. In another word, are chained together by making use of linked list. The hash table slots, instead of holding data elements, will now hold the address of data elements. This implies to set up an array of lists indexed by the keys to lists of items with the same key. For our convenience, linked lists will have headers. Now here is an example where the hash function takes input keys as strings that are last names Javed and Hamid and returns the same index value of 1. We make a hash table of size m, and each cell index of the hash table will contain the head node of the linked list. When last name key Hamid, which is mapped first into the hash table at index 1, a new cell is created and linked with head node by making it next of the head node. And the new cell Hamid information is inserted and the next of Hamid is linked to null. When the last name key Javed, which is mapped second into the hash table at index 1, again a new cell is created and linked with the head node by making it next of the head node, and the next of cell containing Javed is linked to Hamid, and Hamid's next is null. Thus two entries are now stored in a linked list. In this example, let's assume that the keys are the first 10 perfect squares 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, and 81. And you will be inserting in the same sequence. The hashing function is the division method k mod 10, where 10 is the size of m. The table size is not prime here, but it's used for simple demonstrations. इस एग्जाम्पल में हमारी इनपुट कीज़ जो हैं वो फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं. बेसिकली 1 स्क्वेयर, फिर 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर वगैरह अप टू 9 स्क्वेयर. आपका जो हैश फंक्शन है वो रिमाइंडर मेथड का है. अब जो कीज़ हैं इसी सीक्वेंस में एंटर करनी है. 0, 1, 4, 9, 16 एंड अप टू 81. अगर आप किसी दूसरी सीक्वेंस से एंटर करेंगे तो फिर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कुछ बदल जाएगी. यहाँ पे हमने टेबल साइज़ प्राइम नंबर नहीं लिया ताकि हम एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें. For inserting data into the hash table, we will generate hash value with the help of a hash function. For example, for 0 mod 10, which equals 0, we start by going to the hash table's index 0 and find if node is present after the head node. Now this can be checked if head node next is not null. In this case, there is no node, meaning head node next is null. Therefore, we can create a node for key 0 and insert it after the head node. The next of head node will point to the address of node 0, and next of node 0 will point to null. Now let's pick 16 mod 10, which equals 6. In the hash table, we will go to index 6 and find if data node is already there after the head node by checking if head node next is not null. In this case, there is no node.
Therefore, we can create a node for key 16 and insert it after the head node by pointing next of head node address to node 16 and next of node 16 pointing to a null. Now let's pick 36 mod 10 which equals 6. In the hash table, we will go to index 6 and find if node is present after the head node by checking if head node next is not null. In this case, there is a node containing key 16 after the head node. Therefore, we will create a node for key 36 and insert it after the head node by making next of head node pointing to address of node 36 and next of node 36 pointing to address of node 16 and next of node 16 pointing to a null. If the keys are uniformly distributed by the hash function, then the time complexity will be of order 1. हैश फंक्शन में हम कीज़ जो हैं एक सीक्वेंस से एंटर करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 0 मोड 10 है, जहाँ पे 0 जो है वो आपका इनपुट डेटा है, मोड 10 जो है वो आपका रिमाइंडर मेथड है और रिज़ल्ट जो है वो 0 है. अब जब डेटा इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करेंगे, 0 इंडेक्स पे जो लिंक लिस्ट हेड नोड है उसका नेक्स्ट एड्रेस किस तरफ पॉइंट हुआ हुआ. अगर वो नल है तो इसका मतलब कोई डेटा स्टोर नहीं है. एक न्यू सेल क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा 0 एंटर कर देंगे और हेड नोड का जो नेक्स्ट है उस न्यू सेल एड्रेस की तरफ पॉइंट कर देंगे और न्यू सेल का जो नेक्स्ट है वो नल की तरफ पॉइंट कर दिया जाएगा. सिमिलरली अगर आप 16 मोड 10 लें विच इक्वल्स 6, 16 जो है आपका डेटा है, 6 जो है रिज़ल्ट है वो आपका हैश टेबल इंडेक्स वैल्यू है. अब डेटा जो है इंडेक्स 6 पर चेक करेंगे कि जो हेड नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर एड्रेस क्या है. अगर अगेन वो नल है तो वहाँ पर कोई डेटा स्टोर नहीं है. तब हम एक न्यू सेल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर 16 एंटर कर देंगे और इंडेक्स 6 हेड नोड का नेक्स्ट न्यू सेल एड्रेस की तरफ पॉइंट कर दिया जाएगा और न्यू सेल का नेक्स्ट एड्रेस जो है वो नल की तरफ पॉइंट कर देंगे. अब हम 36 मोड 10 विच इक्वल्स 6 पिक कर लेते हैं. इस केस में इंडेक्स 6 का जो हेड नोड है सेल डेटा 16 एड्रेस की तरफ पॉइंटेड है. इस केस में भी हम एक नया सेल क्रिएट करेंगे, उसमें 36 डेटा एंटर करेंगे. हेड नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 36 नोड एड्रेस की तरफ पॉइंट कर दिया जाएगा और नोड 36 का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो डेटा नोड 16 की तरफ पॉइंट कर दिया जाएगा. अब डेटा नोड 16 का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो नल की तरफ हम पॉइंट कर देंगे. To find an element using hash function, look up its position in table, search for the element in the linked list of the hashed slot. To insert an element using hash function, we will look up its position in the table, search for the element in the linked list of the hash slot. To insert an element, we will compute the hash function to determine which list to traverse. If traversing the list of hash table index contains a null pointer, we will initialize this value to point to a linked list that contains key alone. If traversing the list of hash table index is a non-empty list, we add the key at the beginning of this list. To delete an element, we will compute the hash function of the input key to get its hash value.
Then search for the key within the linked list contained in that hash value index by traversing the list. Delete the key if it's found.